बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश 503 की असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन शेयर करूँगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और कंप्लीट वॉच करनी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल मलिक साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी जो नोटिफिकेशंस हों वो आपको बिला तख़ीर आसानी के साथ मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इंग्लिश की 503 असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, अगर इसके टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 20 मार्क्स हैं, और अगर इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो एज़ यूजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनमें जो है वर्ड्स का जो साइज़ है वो होना चाहिए 12 और टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और जो आपकी फ़ाइल है वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस असाइनमेंट में दो क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन है उसके 10 मार्क्स हैं और दूसरे के भी 10 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 1 की, इंग्लिश इज़ परसीव्ड एज अ पासपोर्ट टू बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल प्रेस्टीज इन पाकिस्तान। डिस्क्राइब सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑनलाइन लैंग्वेज लर्नर्स टू अचीव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी फॉर रियल लाइफ यूजेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो मेन पार्ट है, जो मेन पॉइंट है वो ये है, डिस्क्राइब सम ऑफ द चैलेंजेस। ठीक है, हमने जो सम चैलेंजेस जो है उनको डिस्क्राइब करना है। जो ऑनलाइन लैंग्वेज सीखते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑनलाइन सीखते हैं, जो उनको फेस करने पड़ते हैं, वो हमने जो चैलेंजेस हैं वो उनको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन में। डिस्क्राइब सम ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑनलाइन लैंग्वेज लर्नर्स टू अचीव इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी फॉर रियल लाइफ यूसेज। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, here are some of the most common challenges that online language learners face to learn English online, and after learning, how can they apply English in their casual life. First one challenge is, nobody should think little of the significance of realizing how to portray and talk around a language point they don't have a clue. And the second challenge that online language learners face is basically you should do some jargon remembrance and finding out about syntax. There is simply no chance to get around it. However, this ought to be viewed as valuable to your objective of really figuring out how to communicate in another dialect. And the third challenge that online language learners face is vocabulary is one of the key building blocks in learning online English. The more words a learner knows, the more they will be able to understand that they hear and read, and the better they will become at expressing that they want to learn while learning online English. And the fourth challenge that online language learners face is to study the problems and challenges on the implementation of language learning programs. A simply interview and questionnaire survey was held. Interview and questionnaire survey was done to 14 students from Information and Technology Department regarding their language learning experience. They have been learning for 6 to 13 years. This interpretation was intended to identify the significance of that particular item based on students' perception on the implementation of the language learning program. So, our second question is, a literary text is a piece of writing such as prose or poetry which has the purpose of telling a story or entertainment. Using literary texts in the language classrooms can make the students more aware of the language they are learning, help them develop skills and strategies they can apply in many different situations and contexts, increase their interest and motivation, and make the learning of the language more enjoyable. Keeping this in mind, design two English writing activities for grade 5 students using two different literary texts.
फ्रेंड्स, तहरीरी इबारत एक तहरीरी नमूना है, जैसा कि शायरी और नसर। इन दोनों को देखते हुए हमने उनके मकासद बताने हैं कि किस तरह हम इन इस्लाहात को इस्तेमाल करते हुए इनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोज follow the patterns of speech and communication, uses everyday language, sentences and thoughts continue across lines, has a grammatical structure with sentence and paragraph. And if we talk about poetry, incorporate more figurative language. Poems usually stand out in page with columns, varying line length and more white space on a page than prose. Third is traditional poetry has deliberate patterns such as rhythms and rhyme. Many poems have a formal metrical structure repeating of beats. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है।